Everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 19th of December. In this video students, we will be talking about the India Maritime Heritage Conclave. Then we will be talking about an MOU that has been signed between India and UAE. Then we will be talking about IT hardware products, right? Why they are in news, what is the guidelines released for them recently, or what is the purpose of them, right? Then we will be talking about Switch EI V12 and Switch E1 buses. What are these buses, why they have been launched recently, and by whom it has been launched, right? These things we will be discussing in detail, so stay tuned with us till the end. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe, as we are one-stop solution for current affairs. We make sure to upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. Then we upload the weekly current affairs, monthly current affairs, and topic wise they are uploaded regularly, right? And they will help you in enhancing your preparation for the competitive exams. So do watch these videos that are utmost important. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. First news is national affairs, right? We are talking about the inaugural India Maritime Heritage Conclave 2024 held in New Delhi. So many important things. First of all, as it is the inaugural, that means it is the first edition. Then New Delhi is the location where this was held, right? Which is the ministry that organized the India Maritime Heritage Conclave. It is the ministry that organized it, right? So these are some things that you need to remember. Then next question can be asked about the location in New Delhi, that where was this held? It was held at Yasho Bhumi. And Yasho Bhumi, remember, this is the India International Convention Center, right? IIC, correct? And where is it? It is in Dwarka, correct? Take a note of this, right? And there was a theme for this conclave, that is towards understanding India's position in the global maritime history, right? And this conclave was basically held so that we can enhance our maritime sector, right? We can increase the trade that we do with different countries. We can maintain our culture as well as promote our culture and traditions alongside with our trade, right? Through our various products. Then we should bring innovation in this sector, right? Then also we should conserve the maritime sector, because multiple ecosystems are there that helps us to flourish the marine ecosystem. Also, Government of India, they are planning to invest almost 4,000 crore rupees in the next 5 years for the development of National Maritime Heritage Complex, right? Take a note of this. Then also, as I just mentioned, 4,000 crore rupees for the development of NHMC, the NMHC, that is your National Maritime Heritage Complex. Where this complex will be? This will be at Lothal in Gujarat. Very important location, right? And this is the amount of money that has been invested, that is planned to be invested by next 5 years. One more thing, remember here, where is this Lothal? Lothal is also considered as an ancient port, right? And it was the world's first man-made dock in India. Moving on, next we are talking about India and UAE. They have signed a memorandum of understanding that will strengthen the polar and ocean research cooperation at the 15th India-UAE Joint Commission meeting, right? Now, first thing first, we are talking about polar and ocean research cooperation, right? See, now we know that climate change is a real thing, right? And it is happening.
and because of which we are seeing multiple changes in almost all geographies. We saw in Saudi Arabia there was a hail, right, or there was a snowstorm in the desert. That has never happened, right, in the human history that we are observing or in this generation. Correct. So climate change is real, and right, to study the climate change, to study the effect of it on the polar region, then we have increased such a pollution, we are increasing the trade, right, we are doing so much trade, we are using it for logistic purpose, right. So how it impacts our oceans, correct, how it impacts our climate, how it impacts our environment, right. To do study on these things, India and UAE, they have recently signed a memorandum of understanding, correct. It was signed during the 15th India UAE joint commission meeting, and this joint commission meeting was held where? It was held in New Delhi. And from India, it was, or from India, who chaired this? It was chaired by Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, right. And this MOU will focus on defense cooperation, energy, trade, energy security, cultural ties, right, and ensure that both countries work together ahead. Apart from this, remember, between India and UAE, desert cyclone, desert cyclone, this is the name of the army exercise between Indian Army and UAE Army, correct. And this is the first ever edition of this exercise was held when? It was held in January 2024. So do remember this also, desert cyclone, right. So from India, it is India's National Center for Polar and Ocean Research and UAE's Emirates Polar Mission Steering Committee. They have signed this MOU from the respective countries. Correct. Next is DGFT, that is your Directorate General of Foreign Trade, operating under the Ministry of Commerce and Industry, has announced the extension of import management system for 7 years, right. And this basically, what is this import management system, right? We know that we import a lot of goods, even we export a lot of goods, right, but the amount of products that we are importing is much more, correct. Now what is this basically system all about, correct? The importers, they need to have a import authorization through the DGFT portal, correct. And this decision or this process helps them to give various IDs, right. And with that help of that ID, every trade takes place, that a person is trading how much and so on, correct. So DGFT, they have extended the IMS, that is your import management system, for the IT hardware products until December 2025. These includes your laptops, tablets, personal computers, ultra small form computers, servers, etc. Next is Nitin Gadkari, who is our Union Minister of Road Transport and Highways, has recently inaugurated the country's electric vehicle sector, right? Why we are talking about this electric vehicle sector? Because recently 2 buses has been launched that will enhance the electric vehicle sector in India. First is Switch EIV12. Second is your Switch E1, right. These are the 2 buses. These are the first low floor electric city buses that has been launched, and these are the electric buses, right. That's why we are talking about this Switch EI V12 and E1. These are the 2 buses that has been launched here, right. This E1, as E stands for Europe, right. So remember it like this. This Indian launch, the Switch E1, is for the European market. Correct. Take a note of this. This Switch EI V12, it has been designed for better stability, better comfort, and it can have at a time 39 passengers. Next is NLC, right. So recently NLC India has partnered with Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, and this has been signed, or this partnership has been done to launch the first supercritical power plant that has been named 1980 megawatt GTPP, correct. That is your Ghatapur thermal power plant that will be in Uttar Pradesh. So NLC, that is Naval Tamil Nadu based NLC India, they have partnered with Uttar Pradesh Rashtriya Vidyut Utpadan Nigam Limited, and it is for the commencing commercial operation of the first supercritical power plant 1980 megawatt Ghatampur
thermal power plant that will be located in Uttar Pradesh. Correct. This GTPP project, it is aimed to meet the increasing electricity demand in Uttar Pradesh as well as of Assam. Next is Google has partnered with NCRT to launch YouTube channels in 29 Indian languages. This will be a game changer, students, right? Now you will be able to find, even now many creators are there, teachers are there who are providing everything related to NCRT on YouTube channels, right? But now it is Google that has partnered with NCRT, where they will be launching various YouTube channels in 29 Indian languages that will be targeting the syllabus of NCERT in school. This will enhance to provide better education across India. Also, the important thing here, remember, there will be sign languages that will be included for all those students who are hearing impaired, right? They don't able to hear, they are not able to hear. So with the help of sign languages, they will be able to receive this education. Correct. And from class 1 to 12th, all NCRT content will be provided. Next is international affairs, 16th edition of UNCCD, that is your United Nations Convention to Combat Desertification. So 16th edition of this conference of parties was held where? It was held in Riyadh, Saudi Arabia, right? It started from 2nd of December till 13th of December, right? There was a theme on which this COP16 was held, right? Theme being our land, our future. I repeat, our land, our future. This is the theme here for COP16 held in Riyadh, Saudi Arabia. Correct. This conference was focused on renewable energy. It focused on enhancing investment in renewable energy, then focusing on land and boost drought resilience for the benefit of the people. This was the first UNCCD COP being held in the Middle East and North African region, and the event also coincided with the UNCCD's 30th anniversary. Here UNCCD estimates that $2.6 trillion in investment are needed by 2030 to restore over 1 billion hectares of degraded land and enhance the drought resilience. Correct. Also remember, during this, India has presented Aravali Green Wall project. This Aravali Green project aims to revive over 1.1 million hectares of hills across Haryana, Rajasthan, Gujarat and Delhi by 2027, and this will be a game changer for the real estate in the Delhi NCR region. Correct. Next remember, 3/4 of Earth's land became drier in the last 30 years. This was also a data recently released by United Nations, right? This can be because of various regions. This can be because of desertification. This can be because of droughts. This can be because of human settlement, where we have built the concrete cities, right? Because of which we are seeing that 3/4 of the earth land became drier in the last 30 years. Next is 1.4 billion hectares of land facing excessive salinity, threatening global food security as per the data released by Food and Agriculture Organization. What is salinity? Salinity is when the amount of salt in a particular mixture increases, right? Here we are talking about soil. So the amount of salt in soil is increasing, though salinity is increasing, correct? Because if it will be highly saline, right, you will be seeing that the crops won't be growing there, right? There won't be many crops that will be able to flourish in such an environment, in such a soil, correct? So United Nations Food and Agriculture Organization, they have released the first major global assessment report that is about the salt affected soils. This is about last 50 years, right? This was launched during the International Soil and Water Forum that was held in Bangkok, Thailand. So question can be asked, where was the International Soil and Water Forum held? So it was held in Bangkok, Thailand. And this report stated that nearly 1.4 billion hectares of land, or 10.7% of the global land area, was affected by salinity. Correct. If we talk about Food and Agriculture Organization, can you tell me where is the headquarter of it? It is in Rome, Italy. And here remember, it is Australia. That is the country that is highly affected, or the country that is the largest area of the country that is affected. Here it is Australia. Next
Next is World Health Organization. They have recently released a report that stated there has been a 38% drop in the global drowning deaths. What is drowning? Drowning is when a person is drowning or when a person is not able to swim, right? He goes underwater, because in underwater we will not be able to take breath, or we won't be able to breathe, right? Because we do not have gills, we have lungs, so we need air, right? So because of the or we can say the drowning deaths globally has decreased by 38%. This data was released by which organization? World Health Organization, and this was released during an event that was held in Geneva, Switzerland. Right? If we talk about World Health Organization, Director General Dr. Tedros Ghebreyesus, headquartered in Geneva, Switzerland, established in 1948. Next is, here you can see the current state, or you can just go through it, right? Next is banking and finance. We are talking about Ministry of Finance. Remember, Ministry of Finance, they have recently released a data about the gross non-performing assets. What are the non-performing assets? The non-performing assets are those assets, or we can say when bank give loans to some individuals, but they are not able to return that loan, even the interest rate is not being provided, let alone the principal amount, right? So such kind of loans are considered as non-performing assets. So recently Ministry of Finance, they have released the gross non-performing asset data of the public sector banks, right? And it stated that this gross non-performing assets have decreased to a decade low from a peak of 14.58% in March 2018 to 3.12% in September 2024. You can see such a dramatic decrease here has been shown, right? Take a note of this. Apart from this, the capital to risk weighted asset ratio of the public sector banks, that is CRAR, have also improved by 393 basis points, that was 11.45% in 2015 to 15.43% in September 2024. Correct? So the gross net performing assets has declined, and we are seeing that the capital to risk weighted asset ratio has improved. Next is economy and business, right? If we talk about this, we are talking about PhD CCI. What is this PhD CCI? It is your PhD Chamber of Commerce and Industry, right? This is a New Delhi based National Apex Chamber. They have recently released a report on post-COVID GSDP. What is GSDP? GSDP is your gross state domestic product, right? So PhD CCI, they released the data on the post-COVID gross state domestic product growth, right? 17 states have achieved over 9% and 25 states achieved over 7%, right? Which are, or just don't, let's not go in the number wise, but remember in terms of sector, if we talk about agriculture production, it is Punjab, Haryana and UP that are the top performers. For mineral resources, it is Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha that are rich in mineral resources. Then industrial and technological advancement, it was Maharashtra, Gujarat and Karnataka that led in the industrial and technological advancement, right? Then if we talk about infrastructure terms, it was Tamil Nadu and Andhra Pradesh. In terms of renewable energy, Rajasthan and Gujarat are leading. In terms of education and healthcare, it is Kerala and Tamil Nadu that are on the top position. Correct? Next is Fitch has lowered India's GDP forecast to 6.4% for FY25. They have lowered the forecast by 60 basis point, right? Earlier they were projecting that India will be growing by 7%. Now they are projecting 6.4%. Correct? Take a note of this. Next, if we talk about Fitch ratings, can you tell me where is the headquarter of Fitch ratings? It is in New York, USA. Next is TCS. TCS is your Tata Consultancy Service, right? They have extended the partnership with TNDK for another 5 years. What is this TNDK? It is Telenor Denmark.
Correct. This is a leading mobile operator in Denmark, and TCS, they have extended this partnership with Telenor of Denmark by another 5 years. Here TCS will continue to manage the Telenor's Denmark information technology infrastructure from its European delivery center. Next, students, we are talking about appointments and resignations. So recently, Emmanuel Macron, the Prime Minister or the President of France, has appointed Elie Béraud, as you can see him in the picture, as he will be the new Prime Minister of France. Next is acquisitions and mergers. Shriram Finance has sold stake in SHFL, that is your Shriram Finance Limited, that is a NBFC and the flagship company of Shriram Group, and they have completed the sale of their entire 84.44% stake in subsidiary Shriram Housing Finance Limited to the USA based investment firm Warburg Pincus for 3,929 crore rupees. Next is environment. Researchers has discovered 5 new species of the Darwin wasp in India and Thailand. So 5 new species of which kind of wasp has been discovered of Darwin wasps, and where were they discovered locations in India and Thailand. Next is related to sports. Grandmaster D. Gukesh became the youngest world champion at the age of 18 and has broken the Kasparov's record. As you can see him in the picture here, right? He D. Gukesh, Grandmaster D. Gukesh. He is from Chennai, Tamil Nadu, and he defeated the China's Ding Liren and became the world chess champion, and he became the youngest ever world chess champion. Right, with this he became the 18th champion and the youngest champion, and at the age of 18 years, 8 months and 14 days. Correct. Here D. Gukesh was awarded with 11.45 crore rupees with the prize money, and he will also be awarded with 5 crore rupees by the Tamil Nadu government. Correct. And remember, he became the second Indian to win this title after Grandmaster Vishwanath Anand in 2007. Next is important days. International Day to End Violence Against Sex Workers observed on 17th of December. It aims to create awareness about the widespread violence, discrimination and abuse that are faced by the sex workers worldwide. Right? And this was the 21st edition of this day that was observed. Next is related to state news. Gujarat's Chief Minister Bhupendra Patel has launched Prakritik Krushi portal that will promote the organic farming. Organic farming is the type of farming in which we do not use any chemical, any pesticide or the chemical based fertilizers, right? Everything is organic. The manure, the fertilizer that is provided, it is all organic, correct? And organic practices are followed to grow the crops. So Gujarat's Chief Minister Bhupendra Patel has launched this Prakritik Krushi portal that will promote organic farming. In organic farming, it is just a drawback is that when initially you start organic farming, 2 to 3 years, right, it takes for your soil to regenerate its quality, its health. So initially for 2 to 3 years, you will be seeing that there can be a less produce in the farm of the farmer, but after 2 to 3 years, when the quality of the and the health of the soil is fully restored, then you will be seeing that the output eventually will increase after 2 to 3 years in organic farming. Even the quality of the produce that will be coming will be top notch. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be very beneficial in your learning. Next, who among the following were recently awarded the Sakharov Prize for Freedom of Thought 2024 by European Parliament along with Edmundo Gonzalez? So remember, first thing that this Sakharov Prize is given by European Parliament, and who was honored with this Sakharov Prize? So Maria Corina Machado was honored with Sakharov Prize, and this Sakharov Prize is basically for the freedom of thought, right, that promotes fundamental rights, right, and equality. Next, who has been recently selected to be inducted into the International Tennis Hall of Fame Chess of 2025? So who has been elected here? Name that person who has been elected into the International Tennis Hall of Fame. So among the following, here remember Maria Sharapova, right, along with Brian brothers were also inducted here.
Who are the two Bryan brothers? Bob Bryan and Mike Bryan. Next, who was recently appointed as the National Ambassador for Cyber Safety by the Indian Cybercrime Coordination Center to promote cyber safety? So, Rashmika Mandhana, right? She was appointed as the National Ambassador for Cyber Safety by the Indian Cybercrime Coordination Center. And this I4C, this comes under which ministry? It comes under the Ministry of Home Affairs. Next, name the seventh vessel in the anti-submarine warfare shallow watercraft series that was recently launched by the Indian Navy at L&T in Tamil Nadu. So, seventh vessel we are talking about. So, seventh is Abhay. Correct? Take a note of this. Which was the fifth and which was the sixth? Fifth was Agre. Sixth was Akshay. Seventh is Abhay. Next, how many sports will feature in the 23rd edition of the Commonwealth Games scheduled to be held in Glasgow, Scotland? So, a total of 10 sports will be featuring here, right? Wrestling, badminton, hockey, cricket, and shooting. These are the sports that have been dropped from this 23rd edition of the Commonwealth Games. Next, when is the UN Day annually observed across the globe to commemorate the day the UN Charter entered into a force in 1947? So it is 24th of October. We observe this day as UN Day, that is United Nations Day. And this year in 2024, we observed the 79th anniversary of the UN Day. The theme for this is building a better future together. Next, where was the second National Lighthouse Festival? I repeat, National Lighthouse Festival in India celebrated, that to the second edition of it. It was held in Puri, Odisha, and it was held on 19th of October. It began with Lighthouse Tourism Conclave 2024 hosted by Ministry of Port Shipping and Waterways. And this National Lighthouse Festival is observed in order to basically increase tourism, right? Next is who has recently launched international incoming spoofed call prevention system to block spoofed international calls. So Jyotiraditya Scindia ji has launched this international incoming spoofed call prevention system to block spoofed international calls, basically in order to prevent scams, so that these scammers cannot call on the random people's number from anywhere in the world, right? Because most of the scam calls are coming from outside India. Next, which country has the largest number of people living in poverty in the world with 234 million people? So, as per the recent report 2024 of the Global Multidimensional Poverty Index. So, this was the 2024 Global Multidimensional Poverty Index that has been released here. And in this, which country has the largest number of people living in poverty? It is our country, India. India has the largest number of people who are living in poverty. That is close to 1.1 billion people. Also, if we talk about this only, as per the report, India with 234 million people. This is, we are talking about the global data, right? India 234 million people have the largest number of people who are living in poverty. If we talk about Pakistan, it is 93 million, and globally it is close to 1.1 billion people. Out of 6.1 billion people total, 1.1 billion people are living in poverty. Next is, which state has recently received $241.3 million loan from Asian Development Bank to enhance the power distribution in the state? So it is West Bengal state, right? They have received $241.3 million loan from Asian Development Bank to enhance their power distribution. Next, who has recently named the Male International Shooting Sport Federation Athlete of the Year at the ISSF World Cup Final Opening Ceremony in New Delhi? So, Male International Shooting Sport Federation Athlete of the Year. So, Liu Yukun, right? So, Liu Yukun from China has been named as the male, right? And who has been named as the female? This is your, okay, let me give you only. Female is Yang Jin from South Korea has been named as the female
International Shooting Sport Federation Athlete of the Year 2024. Next, when is World Polio Day annually observed across the globe? So, World Polio Day is observed on 24th of October across the globe to create awareness about polio, its treatment, and everything. First World Polio Day was observed in the year 2002. Next, when is National Ayurveda Day observed across India to create awareness about the role of Ayurveda? So, when is National Ayurveda Day observed? It is 29th of October. We observe National Ayurveda Day, and it is to create awareness about the role of Ayurveda and in the prevention and treatment of wide range of the health issues. National Ayurveda Day observed on 29th of October. Right? Next. Correct. National Ayurveda Day in 2024 is on the 29th of October because this day, National Ayurveda Day, is observed on Dhanvantri Jayanti or Dhanteras, that is the festival of Dhanvantri. Next, who has been recently appointed as the new president of the ICC, that is Indian Chamber of Commerce? So, Abhyuday Jindal. Abhyuday Jindal has been appointed as the new president of the ICC, International Chamber of Commerce. Next, who has recently created history by becoming the first Indian artist to be featured on the cover of Billboard, Canada? So, Diljit Dosanjh, right? He created history by becoming the first Indian artist to be featured on the cover of the Billboard in Canada. Students, is our homework section. Tell me recently. First is your India's first Constitution Museum. Where was this inaugurated? Tell me the name of the location and the university. I have given you enough hint. Then second, recently third edition of India Tanzania Joint Defense Cooperation Committee was held where? Name of the location. Third, recently, tell me, if I ask you which force, Indian Army, Indian Air Force or Indian Navy has launched Eklavya. This is an online digital platform for officers training. It was launched by which force? So these are your three homework questions, students. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 19 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव की। देन हम बात करेंगे पोलर एंड ओशन रिसर्च के ऊपर। यहाँ पे अभी कोलैबोरेशन साइन किया गया है किन दो कंट्रीज़ के बीच में। देन आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है, उसको डिस्कस करेंगे। देन यूरोपियन मार्केट में एंड इंडियन मार्केट में अभी नितिन गडकरी जी के द्वारा आपकी बसेज लॉन्च की गई हैं, यूरोपियन बसेस, राइट, उसको डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। हम डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, डेली करंट अफेयर्स की। देन वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड की जाती है, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर हो सके एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एक एज मिल सके बाकी बच्चों के कंपैरिजन में जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। कमिंग बैक स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। एंड जो बच्चे हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, उन तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करो। उनको बताओ अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम डेली बेसिस पे टॉप नॉच कंटेंट आपके लिए प्रेजेंट करते हैं। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes
are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टूडेंट्स, नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं. हम बात करेंगे इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव की. राइट, सबसे पहले याद रखेंगे इसको IMHC, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया. राइट, इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? इस कॉन्क्लेव को जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया. ये कॉन्क्लेव हुई कहाँ पर? लोकेशन क्या रहेगी इसकी? न्यू दिल्ली में हुई. न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर? यशोभूमि में ये हमें देखने को मिली, यशोभूमि जो कि द्वारका में है. करेक्ट. फिर याद रखेंगे इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम ग्लोबल एक्सपर्ट्स, अकेडमिशियंस. राइट, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान भी है कि हम 4,000 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा करेंगे आने वाले 5 सालों में, ताकि हम नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को इस्टेब्लिश कर सकें. ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स क्या है? ये बेसिकली आपका लोथल में रहेगा, गुजरात में. राइट, एंड इस सिटी को प्रमोट करने के लिए एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड डॉक. करेक्ट, एंड काफ़ी हिस्ट्री में लोथल एक सिग्निफिकेंट पोर्ट रहा है. राइट, तो ये लोथल में रहने वाला है क्या? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. एक और चीज़ याद रखेंगे, जो ये कॉन्फ्रेंस थी इसकी थीम क्या थी? थीम आपको यहाँ पे दी गई है, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री. इससे क्या होगा? देखो, एक तो हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश करेगा, हमारे कल्चर को सिग्निफिकेंस और मिलेगी, हमारा कल्चर प्रमोट होगा. राइट, एंड बेटर टेक्नोलॉजीज यहाँ पे लाई जा सकेंगी ताकि हम पोर्ट्स को ग्रो कर सके, अपने ट्रेड को ग्रो कर सकें. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया एंड यूएई. इनके द्वारा भी एक MOU साइन हुआ जहाँ पे ये स्ट्रेंथन करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पोलर एंड ओशन रिसर्च. राइट, तो पोलर एंड ओशन रिसर्च के ऊपर, राइट, क्या क्या हम वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या हमें नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या हम स्टडीज़ कर सकते हैं जिसके हम रिसर्च पेपर आगे लिख सकते हैं, जो आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं. राइट, क्या ओशंस पर एंड पूल्स पर क्लाइमेट का इफेक्ट हो रहा है. राइट, कैसे ये हमारे वेदर पैटर्न्स को इफेक्ट करते हैं. राइट, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को या फिर पॉल्यूशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे क्या इम्पैक्ट रहता है पोलर एरियाज पे एंड ओशंस रीजन्स में. राइट, तो इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, इनके ऊपर स्टडी करने के लिए इंडिया एंड यूएई के बीच में यहाँ पे एक MOU साइन हुआ. ये MOU साइन हुआ था ड्यूरिंग द 15th India-UAE जॉइंट कमीशन मीटिंग. ये कहाँ हुई थी? ये भी न्यू दिल्ली में हुई थी. लेकिन एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे इस मीटिंग को चेयर किसके द्वारा किया गया? आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर. एक और चीज़ यहाँ पे इंडिया की तरफ से था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, एंड यूएई की तरफ से था एमिरेट्स पोलर मिशन स्टीयरिंग कमेटी. एंड इसी मीटिंग के दौरान जो ये 15वीं इंडिया-UAE जॉइंट कमीशन मीटिंग हुई थी जो न्यू दिल्ली में हुई, इसके दौरान हमें कॉपरेशन के ऊपर बात की, हमें एनर्जी के ऊपर बात की, डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर बात की, एक दूसरी कंट्रीज में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई. नेक्स्ट एक और चीज़ हम बात करेंगे डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज की. ये डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड यूएई आर्मी के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था. पहली बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था जनवरी 2024 में. मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं DGFT, जो कि है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इन्होंने अनाउंस कर दिया एक्सटेंशन ऑफ द इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर 7 IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बाय 1 ईयर. 1 साल के लिए इनको एक्सटेंशन मिल गया. 31 दिसंबर 2025 तक इसको एक्सटेंशन मिल गया है. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. राइट, एक और चीज़, ये डिसीजन क्या है? बेसिकली जो सप्लाई डिमांड गैप है ना, उसको एड्रेस करने के लिए ऑफ द IT हार्डवेयर मार्केट ये लाया गया है, इसलिए एक्सटेंशन मिला है. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी. इन्होंने अनवेल की स्विच EI-V12 एंड स्विच E1 बसेस को. ये इंडिया की पहली लो फ्लोर इलेक्ट्रिसिटी बस रहेगी, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट लीप इन द कंट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर. राइट, स्विच EI-V12. अगर मैं E1 बात की करूं, स्विच E1, ये E का नाम यूरोपियन, तो ये यूरोपियन मार्केट के लिए लॉन्च की गई है एंड इंडियन मार्केट के लिए स्विच EI-V12 को लॉन्च किया गया है. मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगी दोनों. नेक्स्ट है NLC इंडिया. इन्होंने पार्टनर किया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ. राइट, ताकि जो कमर्शियल ऑपरेशन है, पहले सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट 1980 मेगावाट
घटमपुर थर्मल पावर प्लांट का इन यूपी, राइट। इसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है उसको यहाँ पे कमेंस करने के लिए ये पार्टनरशिप साइन की गई है। इससे जो उत्तर प्रदेश की एंड असम स्टेट की जो बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ना, उसको यहाँ पे कैटर करने का काम किया जाएगा इस नए थर्मल पावर प्लांट से। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं गूगल पर। गूगल ने अभी पार्टनर किया है एनसीईआरटी के साथ, ताकि जो एनसीईआरटी का कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसको हम यूट्यूब पर ला सकें। एंड ऐसे यूट्यूब 29 इंडियन लैंग्वेजेस में यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, राइट। तो हर क्लास का 1 से लेके 12वीं क्लास की जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं, उसमें जो भी आपका सिलेबस है, जो भी कंटेंट है, वो यहाँ पे यूट्यूब पे 29 इंडियन लैंग्वेजेस में लाने का काम करेगा यूट्यूब एंड एनसीईआरटी। एक और चीज़ याद रखेंगे, गूगल एंड एनसीईआरटी यूट्यूब पे लाने का। एक चीज़ और समझिए कि अभी आप देखते हैं यूट्यूब चैनल पे, जैसे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे एनसीईआरटी से रिलेटेड भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक और अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। वो जनरली आपका इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, राइट। लेकिन 29 इंडियन लैंग्वेजेस में जब ये प्रोवाइड कराएंगे तो हर लैंग्वेज को यहाँ पे कैटर कर पाएगा और बच्चा अपनी मदर टंग में अपना कंटेंट एजुकेशन ले सकेगा। ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहने वाला है अगर हमें एजुकेशन को आगे प्रमोट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। तो COP 16 की बात करेंगे। कहाँ पर हुई? रियाद, सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिली। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। इसकी एक थीम और याद रखेंगे। थीम है आर लैंड आर फ्यूचर। आर लैंड आर फ्यूचर, ये आपकी थीम रहेगी COP 16 की, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे UNCCD ने एस्टिमेट किया कि $2.6 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लगेगी 2030 तक, अगर हमें रिस्टोर करना है 1 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड एंड एनहेंस द ड्रॉट रेजिलियंस। एंड ये पहली बार हुआ है कि COP 16 आपकी या फिर COP की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसी मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में हमें देखने को मिली है। एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे इंडिया ने ड्यूरिंग दिस COP 16 एक चीज़ प्रेजेंट करी, वो है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो अरावली जो हिल्स हैं ये आपके हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में है, राइट। तो यहाँ पे इस अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसका एम रहेगा कि यहाँ पे रिवाइव कर सके मोर देन 1.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को, राइट। काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये अगर हमें अपने ग्रीन कवर इंडिया में बढ़ाना है। मूविंग ऑन, एक और चीज़ डाटा रिलीज किया गया कि जो 3/4 ऑफ द अर्थ का लैंड है, इट बिकेम ड्रायर इन द लास्ट 30 ईयर्स। ये UN के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है। अराउंड 77.6% ऑफ द लैंड हैव बिकम ड्रायर। ये रीज़न क्या हो सकता है? डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट, राइट। फिर हम लैंड पर अपना वो कर देते हैं, सीमेंट बनाकर अच्छा प्रॉपर कवर कर लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये UN का आर्म है। इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें बताया कि 1.4 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ये एक्सेसिव सैलिनिटी फेस कर रही है, थ्रेटनिंग द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। सॉइल में ही आपका सारा खाना बनता है और उगाया जाता है, राइट। अगर सॉइल में सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो लैंड जो है वो फर्टाइल कम हो जाएगी, राइट। वहाँ पे फर्टिलिटी कम हो जाएगी लैंड की, तो कोई क्रॉप्स कम ग्रो करेंगी, राइट। एंड सैलिनिटी बेसिकली होता है सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाना किसी भी कंटेंट में। तो लैंड में, सॉइल में आपकी सैलिनिटी बढ़ गई तो इससे खाना आपकी क्रॉप्स कम उगेंगी। क्रॉप्स कम उगेगी तो जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है उस पर एक संकट आ सकता है। तो ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फेस कर रहा है एक्सेसिव सैलिनिटी, राइट। ये डाटा रिलीज किया गया UN के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए COP 16 के दौरान ही रियाद ने कितने अमाउंट लॉन्च किया, कितना अमाउंट फंड करने की बात की गई टू कॉम्बैट ड्रॉट एंड लैंड डिग्रेडेशन, तो $12 बिलियन यहाँ पे लाने की, खर्च करने की बात की गई रियाद, सऊदी अरेबिया के द्वारा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट रिलीज की गई। इन्होंने बताया कि जो डूब के मरने से जो डेथ होती थी या फिर डूबने से जो डेथ होती थी उसमें हमें 38% का ड्रॉप देखने को मिला है, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा को रिलीज़ किया गया था, राइट। और इसी में याद रखेंगे ये डाटा रिलीज़ किया गया ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गिब्रेसेस, हेडक्वार्टर इसका रहेगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, एंड 1948 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं
बैंकिंग एंड फाइनेंस पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट का। ये एनपीएस क्या होते हैं कि आपने मान लो कोई बैंक ने कोई लोन दिया, राइट, तो जो इंडिविजुअल ने लोन लिया वो लोन भी नहीं पे कर पाया, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ ही दो, इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहा, राइट, तो वो आपका एक कहीं ना कहीं नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, करेक्ट। तो जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसमें हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कम होते हुए जा रहे हैं, राइट। जो 14.58% थे मार्च 2018 में, वो घट के 3.12% हो गए हैं इन सितंबर 2024। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं, राइट। ये हमारी इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। इसी के अलावा अगर हम बात करें कैपिटल रिस्क टू वेटेड रेशो, राइट, कैपिटल रिस्क टू वेटेड रेशो, इसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला ऑफ 393 बेसिस पॉइंट, जो कि 11.45% हो गया है, था मार्च 2015 में, जो कि बढ़ के 15.43% हो गया सितंबर 2024 में। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। हम बात करेंगे पीएचडी सीसीआई रिपोर्ट। इन्होंने पोस्ट कोविड-19 की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका डाटा बताया कि 7 स्टेट्स ने अचीव किया 9% से ज़्यादा जीएसडीपी एंड 25 स्टेट्स ने यहाँ पे 7% से ज़्यादा जीएसडीपी को अचीव किया। यहीं पे अगर हम इंडिविजुअल सेक्टर्स की देखें उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में पंजाब, हरियाणा एंड यूपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वहीं पे मिनरल रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ने बेटर परफॉर्म किया। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर मैं बात करूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला। इसी के अलावा अगर बात की जाए टूरिज़्म की, टूरिज़्म में केरला, राजस्थान, गोवा बेटर परफॉर्म करते हुए दिखे। अगर हम बात करें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ग्रो करते हुए दिखे। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो राजस्थान एंड गुजरात ने यहाँ पे टॉप किया। अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन सेक्टर, तो केरला एंड तमिलनाडु यहाँ पे टॉप पे रहे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिच रेटिंग्स के द्वारा इंडिया का जो जीडीपी फॉरकास्ट है फॉर FY25 उसको लोअर कर दिया गया है। पहले फिच प्रोजेक्ट कर रहा था कि इंडिया 7% से ग्रो करेगा, लेकिन अब उन्होंने 60 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर अपना प्रोजेक्शन कम कर दिया है टू 6.4%। फिच रेटिंग्स की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में रहेगा एंड यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे इयान लिनेल। नेक्स्ट आ जाते हैं टीसीएस ने अभी पार्टनरशिप TNDK, ये क्या है, टेलीनॉर डेनमार्क, ये मोबाइल ऑपरेटर है डेनमार्क में। तो टीसीएस इनका सारा मैनेज करती थी, सिस्टम हैंडल करती थी, करेक्ट। तो अब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था टीसीएस के साथ इन्होंने 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है, करेक्ट। इससे स्मूथ बिजनेस होगा एंड बेसिकली इनको ग्रो करने में ये इनका पूरा जो भी मैनेजमेंट था वो टीसीएस के द्वारा हैंडल किया जाता था, उसको 5 साल तक और हैंडल करेंगे अभी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। फ्रांसिस बेरो, इनको ये नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं फ्रांस के। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, डायरेक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर आते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस ने अपना 84.4% स्टेक, कंप्लीट स्टेक अपना सब्सिडरी में जो कि एक एनबीएफसी है, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, उसमें सेल कर दिया है। किसको सेल किया? वॉरबर्ग पिनकस, जो कि यूएस बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। कितने अमाउंट के लिए? 3,929 करोड़ रुपीज़ के लिए अमाउंट इनके द्वारा सेल कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट पर। तो अभी रिसर्चर्स के द्वारा इंडिया एंड थाईलैंड में 5 नई स्पीशीज़ डिस्कवर की गई हैं डार्विन वेस्ट की, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। तो कहाँ पर? इंडिया और थाईलैंड में डिस्कवर की गई हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो डी गुकेश, जो कि हमारे ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये चेन्नई, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने अभी चाइना के डेंग लेरेन को फाइनल में हरा दिया ऑफ द एंड। ये विजेता बन गए हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन, या फिर ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं 2024 के। मार्क करके चलेंगे, ये सेकेंड इंडियन बने हैं, यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे एंड 18th इंडिविजुअल चैंपियन बने हैं। ये कितने साल के थे जो ये यंगेस्ट बने हैं? तो ये 18 साल 8 महीने एंड 14 डेज के हैं जब ये ग्रैंड मास्टर, जब ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बने।
करेक्ट, सेकंड ग्रैंड मास्टर फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया, पहले कौन थे, विश्वनाथ आनंद। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एंड इसका फाइनल एक और चीज़ याद रखेंगे, सिंगापुर में हुआ था इसका फाइनल इवेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं, इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स, 17 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वाइड स्प्रेड वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्स वर्कर्स के खिलाफ जो अब्यूज़ फीस की जाती है, एंड जो इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए उनके ह्यूमन राइट्स उनको प्रोवाइड कराने का जो काम करेगी। तो इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स 17 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने इसका 21st एडिशन यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है प्राकृतिक कृषि पोर्टल, जो कि प्रमोट करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जब आप अपनी सॉइल में फार्मिंग करते वक्त कोई भी केमिकल यूज़ ना करें, कोई पेस्टिसाइड यूज़ ना करें, राइट, ऑर्गेनिक खाद को यूज़ करें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप उसको खाद बना के यूज़ करें, राइट। तो उसको प्रमोट करने के लिए ये प्राकृतिक कृषि पोर्टल लॉन्च इनके द्वारा करा गया। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का ना एक चीज़ बच्चों हमेशा याद रखना, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं ना किसी सॉइल पे, तो सॉइल को 2 से 3 साल लगते हैं अपनी पूरी हेल्थ को रीजनरेट करने में, राइट। जो प्रॉपर की सॉइल की गुड हेल्थ होती है, गुड सॉइल जिसको कहते हैं, राइट, अपने उसको अचीव करने में 2 से 3 साल लगते हैं। तो इस पीरियड के दौरान जो प्रोड्यूस होता है ना वो कम होता है, राइट, कम आपका आउटपुट देखने को मिलेगा। इसीलिए फार्मर्स भी ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है कि आप अगर 2 से 3 साल आप उस सॉइल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेते हैं, तो आप देखेंगे 2 से 3 साल बाद जो आउटपुट होगा ना, जो क्वांटिटी एंड जो क्वालिटी होगी, उस दोनों में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा 2 से 3 साल बाद, क्योंकि जो सॉइल है वो प्रॉपर आपकी अब अच्छी सॉइल बन चुकी होगी, गुड हेल्थ सॉइल हो चुकी है, उसमें सभी न्यूट्रिशन होंगे और सब ऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025। तो वो है मारिया शरापोवा, राइट। इनको सेलेक्ट किया गया एंड फॉर द क्लास ऑफ 2025 आईटीटी हॉल ऑफ फेम में। इन्हीं के अलावा 2 और लोगों को इंडक्ट किया गया, दोनों भाई हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रायन ब्रदर्स, राइट। ये ब्रायन ब्रदर्स कौन है, बॉब ब्रायन एंड माइक ब्रायन। नेक्स्ट, who was recently appointed as the national ambassador for cyber safety by the इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि I4C है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, राइट, साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। तो किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया नेशनल एम्बेसडर, तो वो है रश्मिका मंदाना, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं, इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है साइबर सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द 7th वेसल इन द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी एट LNT कटुपल्ली इन तमिलनाडु। हम बात कर रहे हैं 7th वेसल की, तो वो है अभय। 7th वेसल है अभय। अगर मैं बात करूं 5th एंड 6th वेसल की, तो ये कौन कौन सी हैं? 5th वेसल आ जाती है अग्रय एंड 6th वेसल आ जाता है अक्षय। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्पोर्ट्स विल फीचर द 23rd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो 10 स्पोर्ट्स को यहाँ पे फीचर किया जाएगा बस 23वें एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स के, जो स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा। जैसे रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट एंड शूटिंग, इनको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट, when is the UN Day annually observed across the globe to commemorate the day of the UN Charter entered into force in 1945। तो 24 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं UN Day। 1945 में UN Day बना था एंड इस बार 2024 में 79th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी है UN की। थीम है इसकी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर टुगेदर, ये यहाँ पे थीम रहेगी आपकी UN Day की। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सेकेंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेटेड। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो पूरी ओडिशा में ये ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट करने के लिए यहाँ पे इसको लाया गया है एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव हुई थी, जिसके दौरान इसको सेटअप किया गया। Next, who has recently launched international incoming spoofed call prevention system to block spoofed international
कॉल्स। स्पूफ्ड कॉल्स बेसिकली हो जाती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी स्कैम कॉल्स आती हैं, इंडिया से नहीं बाहर से कॉल्स आती हैं, स्कैम कॉल्स होती हैं। उनको रोकने के लिए उनका सफिक्स तो 9+91 होता है, लेकिन वो ओरिजिनेट अब्रॉड से होती हैं, बाहर से होती हैं। तो ऐसी कॉल्स को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए, फाइनेंशियल स्कैम्स को रोकने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। किन के द्वारा लाया गया? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी के द्वारा इसको लाया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन द वर्ल्ड विद 234 मिलियन पीपल एज पर द रिसेंट रिपोर्ट 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये है हमारा इंडिया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन द वर्ल्ड विद 234 मिलियन पीपल, एंड ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है। राइट, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में 234 मिलियन लोग पॉवर्टी के नीचे रहते हैं। इवन ग्लोबली बात करें तो 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी में जी रहे हैं आउट ऑफ 1.6 बिलियन टोटल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव 241.3 मिलियन लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक टू एनहेंस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट। तो ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल रिसीव 241.3 मिलियन लोन फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ताकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट में उसमें एनहेंस किया जा सके, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बन सके इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई के लिए। देन किन्होंने रिसेंटली या हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द मेल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल ओपनिंग सेरेमनी इन न्यू दिल्ली। तो किनको रिसेंटली नेम किया गया यार? हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द मेल ISSF एथलीट ऑफ द ईयर। तो वो है मेल है ली युकुन, राइट, चाइना से बिलोंग करते हैं। यहीं पे अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल कौन है? यांग जिन, राइट, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, पोलियो डिजीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड पोलियो डिजीज को इरेडिकेट खत्म करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहला वर्ल्ड पोलियो डे 2002 में ऑब्जर्व किया गया था 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ आयुर्वेदा। तो 29 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे, ताकि आयुर्वेदा के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है धनतेरस पर, और इस बार 2024 में ये 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICC। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? वो है अभ्युदय जिंदल। नेक्स्ट, who has recently created history by becoming the first Indian artist to be featured on the cover of Billboard Canada। So ये है दिलजीत दोसांझ, राइट। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी by becoming the first Indian artist to feature on the cover of Billboard Canada। Next, which country has recently hosted the 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities in collaboration with World Health Organization। तो ये है हमारी इंडिया, जिन्होंने होस्ट किया 19th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन कोलैबोरेशन विद WHO। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया 16वां ब्रिक्स समिट को फ्रॉम 22 टू 23 ऑफ अक्टूबर 2024? ये रहेगी रशिया के द्वारा होस्ट किया गया था इसको, एंड इसी के दौरान एक कजान डेक्लेरेशन साइन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे होमवर्क में बताओ क्या है कजान डेक्लेरेशन। हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम डेली करंट अफेयर्स में। एंड कजान क्यों? कजान एक जगह है रशिया में जहां पर ये 16वें ब्रिक्स समिट हुई थी। इवन PM मोदी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इसमें। Next, what is the total number of entities in the RBI alert list after adding 13 more firms in the list of October 2024? तो ये है 80, राइट। 80 a total number of entities in RBI alert list after 13 more is now 80. Correct. Next is who was recently declared as the 6th president of बोत्सवाना। छठे प्रेसिडेंट कौन बने हैं बोत्सवाना के? वो हैं डूमा बोको। ये सक्सीड किनको करेंगे? मोगवेत्सी मसीस्को। Next, which company has recently signed a binding agreement to acquire 46.8% stake of Orient Cement Limited for an equity value of 8100 crore rupees? तो वो है अंबुजा सीमेंट, राइट। एंड
ये एक लीडिंग सीमेंट कंपनी है इंडिया में जो कि पार्ट है अडानी ग्रुप की, एंड इन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया टू एक्वायर 46.8% स्टेक ऑफ ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट, who has recently secured a silver medal in the women's recurve event at the Hyundai Archery World Cup फाइनल जो कि मैक्सिको में हुआ। तो किन के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया? ये है इंडिया की दीपिका कुमारी। करेक्ट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये 18th एडिशन था ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप जो कि वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा होस्ट किया गया था, एंड गोल्ड मेडल जीता गया ली जियामन के द्वारा। ये ली जियामन ये चाइना के हैं। नेक्स्ट, हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द वॉल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन इन जनवरी 2025? तो वो हैं जेम्स गॉर्मन। ये नए चेयरमैन रहेंगे वॉल्ट डिज्नी कॉर्पोरेशन के। नेक्स्ट, नेम द प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह वर्थ $25 मिलियन टू स्ट्रेंथन द एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी इन इंडिया। तो कौन सा वो प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट का नाम है पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट पहला। दूसरी चीज इन्होंने यहाँ पे जो लॉन्च करी है वो है 21वां लाइव स्टॉक सेंसस। सेंसस हो गया जनगणना, बेसिकली लाइव स्टॉक की जनगणना। 200 करोड़ रुपए की लागत से होगा ये, और फरवरी 2025 तक ये चलता रहेगा। अगले पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे। पहला बताओ, ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी एंड यूएसए की क्या रैंक रहेगी। सेकंड, ज़रा बताओ अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए यूपीआई लाइट टॉपअप ये फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है। थर्ड क्वेश्चन, अभी रिसेंटली इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स।